Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce by Anup sir. In today's topic, in today's video, we are going to discuss compensation management. Compensation means what we are giving to someone in their contribution. What we are giving to someone in their contribution, in respect to their contribution. Compensation means to sold out, to pay something to somebody in turn of his contribution towards our side. So compensation means to pay the employees. What employees receive in exchange of their contribution to the organization. Means the employees are giving you time, they are working for you, they are making profit for your organization, and in return of this contribution, what we are giving to them, that is known as compensation. In normal term, in simple term, this is the salary of the employees. Compensation means जो काम कर रहे हैं, जो टाइम वो हमें दे रहे हैं, जो प्रॉफिट वो हमें कमा के दे रहे हैं, उस प्रॉफिट के बदले में हम उनको क्या पे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज compensation. What employees receives in exchange of their contribution to the organization. Organization के contribution में हम उनको क्या देते हैं, क्या उनको दिया जाता है, that is known as compensation. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें, तो दिस इज सैलरी पेमेंट, कि आपने जो काम किया उसके बदले में आपको क्या मिला, दैट इज कंपनसेशन. एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब हाउ टू मैनेज द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, कितना बोनस देना है, कितना इंसेंटिव देना है, कौन सा मॉनेटरी टर्म्स में आएगा, कौन सा नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आएगा, उसको मैनेज करना. That is known as compensation management, because there are different type of employees in the organization, there are different type of hierarchies in the organization, and there are different type of people having the different experience, having the different education qualification, and they are working at different positions. So what will be the salary according to their position, their education, their experience and their skills. तो उस सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है, इन सब चीज़ों को जो मैनेज करता है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन मैनेजमेंट. मीन्स हाउ वी विल डिसाइड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, हाउ वी विल organize the various employees in respect to their salary, that is known as compensation management. compensation management को सही तरीके से मैनेज करने के लिए there is a compensation philosophy, compensation philosophy in the organization. फिलोसफी कह लीजिए या कंपनसेशन पॉलिसी कह लीजिए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कंपनसेशन पॉलिसी या कंपनसेशन फिलोसफी जो है होती है कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे सैलरीज को. और कंपनसेशन फिलोसफी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स द बेसिक सैलरी, दैट व्हाट विल बी द बेसिक सैलरी फॉर द various positions in the organization, what will be the benefits, what will be the percentage of compensation in terms of their performance, what will be the incentive, what will be the non monetary benefits reward with the salary, and what will be the various other benefits which we are given to the organization. So compensation philosophy helps you in designing a compensation system for the employees. Clear? This is known as compensation management and compensation philosophy. क्लियर हुआ? कंपनसेशन का मतलब जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी स्किल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, उनके बदले में हम उनको कितनी सैलरी दे रहे हैं, दैट इज नोन एज कंपनसेशन. एंड उस कंपनसेशन को जो मैनेज किया जाता है, उसका एक जो सिस्टमेटिक वे होता है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन मैनेजमेंट. एंड फॉर proper implementation of compensation management system, there should be a compensation philosophy or there should be a compensation policy. Policy means guidelines, means there are guidelines in the organization for managing the salary of the employees. Clear?
what is the importance of compensation philosophy या what are the importance of compensation management, कि हमें compensation को manage करने की ज़रूरत क्या है, why we need to spend so much time on this, what is the objective of compensation management. First is internal equity, means there is no discrimination among the employees. The employees at same position should get the same salary. Clear? Employees at same position, not all the employees are getting the same salary, but employees at same position are getting the same salary. That is internal equity. That is the objective of compensation management, so that there is no discrimination among the employees. Next is external equity, and the employee should get the salary equal to the external employee at the same position, means what the other organizations are paying to the employees who are at the same position as your employees are working. That is external equality. And next is individual equity, means there should be no competition among the employees. The employees having the same skills, having the same experience, having the same education should get the same salary. If there is same salary in the organization, same salary at outside the organization, so there will be no dissatisfaction among the employees and it will motivate them. So a good compensation is important for motivation of the employees. It motivates them to work well. Clear? So this is what is compensation system. What are the objectives of compensation management. Next is component of compensation. Compensation एक comprehensive term है, it includes many items. ठीक है, तो कंपनसेशन के कंपोनेंट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होते हैं. तो कंपनसेशन एक कंपनी का दो चीज़ों से बना होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, एंड समटाइम्स दीज आर आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मीन्स which is related to the money, which is related to the monetary benefits, means where we pay employees direct in the money terms. पैसे की टर्म में हम उसको पैसे दे रहे होते हैं, किसी और टर्म में नहीं दे रहे होते. तो that is known as financial. Extrinsics, that are related to the organization, not related to the job. Clear? That's why they are known as extrinsic. Financial दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स जो हम डायरेक्टली उसको कैश में पे कर रहे होते हैं, जो उसको दिए ही जाते हैं. इनडायरेक्ट मीन्स दीज आर नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ काइंड, दीज आर नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ काइंड्स. या और ये कई बार कैश के टर्म में भी तो होते हैं, तो बट हर टाइम आपको नहीं मिलते. दे आर अवेलेबल व्हेन यू नीड देम, लाइक मेडिक्लेम हो गया, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो फाइनेंशियल कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स हम डायरेक्टली जो उनको पे कर रहे हैं. पहला आता है इसमें सैलरी और वेज. सैलरी मीन्स बेस सैलरी क्या दे रहे हैं. सैलरी होता है कि एक मंथली आपको मिलता है विदाउट कंपैरिजन टू योर परफॉर्मेंस. वेज आपको डेली बेसिस पे देता है, मीन्स फॉर हाउ मेनी डेज यू आर वर्किंग यू विल गेट द सैलरी फॉर ओनली दोज डेज. तो वेज एंड सैलरी. इंसेंटिव, पेमेंट बाय रिजल्ट. पेमेंट बाय रिजल्ट. इंसेंटिव इज नोन एज पेमेंट बाय रिजल्ट, मीन्स जितना आप पे करोगे, जितना आप रिजल्ट अच्छा दोगे, उतनी आपको पेमेंट मिल जाएगी. पेमेंट बाय रिजल्ट. इंसेंटिव इज नोन एज पेमेंट बाय रिजल्ट. कैश मीन्स इफ यू आर डूइंग बेटर, इफ यू आर अचीविंग द गोल्स, इफ यू आर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव, यू विल गेट द इंसेंटिव. पेमेंट बाय रिजल्ट, दैट इज नोन एज पेमेंट बाय रिजल्ट. मीन्स जितना अच्छा रिजल्ट दोगे उतनी पेमेंट आपको मिल जाएगी. क्लियर? पेमेंट बाय रिजल्ट इज इंसेंटिव. ये कैश में दिया आता है. इंसेंटिव दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव एंड ग्रुप इंसेंटिव्स. इफ वी आर पेइंग इंसेंटिव ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, दैट इज इंडिविजुअल इंसेंटिव्स. एंड ग्रुप इंसेंटिव मीन्स व्हेन एम्प्लॉइज आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, मीन्स वन ग्रुप इज डूइंग वेल, वी पे incentive to that group and that distribute among all the members. Clear? तो wage salary determination,
and incentive. These are direct. But in spite of these two direct financial incentives, there are two more indirect benefits which we provide to the employees. First is fringe benefit. First is fringe benefits, means like provident fund, health insurance, hospitalization, accident relief, canteen, uniforms, और जो भी चीज़ हम उसको जॉब के अकॉर्ड एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज नोन एज फ्रिंज बेनिफिट, मीन्स which are given to you when you are using that service. Like provident fund hai, you will use that provident fund when you will relieved from the job. Medical insurance you need when you are hospitalized or you are need some medical attention, like travel, like canteen, like uniform. इस तरह की जो चीज़ें पे की जाती है, that is known as fringe benefit. Fringe benefit में आता है. Next is prerequisite. Prerequisite means allowed to pay इन टर्म्स ऑफ काइंड, मीन्स आपको काइंड की टर्म्स में या गुड्स की चीज़ में जो दी जाती है, लाइक कार, क्लब मेंबरशिप, हाउस एकोमोडेशंस आपको प्रोवाइड किया है, लाइक स्टॉक इक्विटी ऑप्शंस, एंड दीज आर नॉर्मली फॉर द हायर पोजिशंस. दीज आर नॉर्मली फॉर द हायर पोजिशन, कार, क्लब मेंबरशिप, हॉलीडे पैकेजेस एंड ऑल दीज. क्लियर. तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में आता है सैलरी और इंसेंटिव, इनडायरेक्ट में आता है फ्रिंज बेनिफिट्स और प्रिक्विजिट्स. नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल्स, इंट्रिंसिक, विच आर रिलेटेड टू द पर्सन, मीन्स हाउ द पर्सन्स थिंक अबाउट द जॉब. दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंपनसेशन, मीन्स सेटिस्फैक्शन, your challenges of the job, recognition at the job, reward at the job, that are known as non-financial incentives. Growth perspectives, working conditions, job sharing, वो सारी चीज़ें हम किस तरह से करते हैं, तो that is prerequisite, that is non-financial incentive. क्लियर हुआ कंपनसेशन क्या है और कंपनसेशन के जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड नॉन फाइनेंशियल इज डिवाइडेड इन जॉब कंटेक्स्ट. जॉब कंटेक्स्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं. क्लियर, समझ आया. नेक्स्ट, हाउ द कंपनसेशन इज डिसाइडेड. What are the various factors that affect the compensation in the organization? How the compensation is decided? So there are, as we are living in the society, so there are two factors affecting the compensation, external and internal. As the name indicate, external are related to society, which are outside the organization, which are uncontrollable. Clear? And internal factors are related to the organization, which are controllable by the organization. So there are two type of factors, internal and external. External में first includes labor market, means what is the availability of the labor in the market, means what type of individual you need in your organization is easily available in the market or not. If there is easily available, the salary can be discussed or that can be bargained accordingly. Cost of living, where our company is situated, what is the living index of that city, means maybe the person who is living in Issa can live at 10,000 or 15,000, but the person who is living in Bombay or Delhi need 30,000 for the same job. तो that is cost of living, means जिस एरिया में हमारी कंपनी है वहाँ पे cost of living क्या है, कितना cost of living index जो है क्या आता है. लेबर यूनियन, pressure of labor union, sometime labor union forced to management to decide the compensation, कि कितना compensation हमें उनका करना चाहिए. लेबर लॉज, what are the laws of the government, acts क्या हैं, laws क्या है, minimum salary कितने देने हैं, फेयर वेज कितना देना है, वो लेबर लॉज जो है आपके कंपनसेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है. सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आपके लोग रह रहे हैं, वो जो है आपके कंपनसेशन सिस्टम को डिसाइड करती है. तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंपनसेशन सिस्टम. नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर, बिजनेस स्ट्रेटजी. व्हाट इज द बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द पर्टिकुलर
company for the particular jobs, how we are doing the business, what is our policy और philosophy, जो हमने starting में बात की थी कि what is the compensation policy of the company. कुछ कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो उससे बाहर जो है नहीं जाना चाहते. नेक्स्ट इज जॉब इवोल्यूशन and how we evaluate the job. As in the earlier video we have discussed job evaluation. Job evaluation, the relative worth of the job. So what is the job evaluation system in the organization? How they evaluate the job. Next is performance appraisal. And performance appraisal क्या है? Employees का how they are performing, how much they are doing for the organization. If they are doing good, they will get the more salary, more incentive. If they are not doing good, we have to reduce the salary or we have to invest on the training and the development of the employees. And last one is the employees. What type of employees we have? For the highly skilled employees, we have different compensation system. For the semi-skilled employees or unskilled employees, we have different compensation system. So these are the two factors on which the company decides the compensation system. The company decides the compensation systems. Next is, what is the theories of compensation system? Means how the compensation is decided. What are the theories of compensation? What are the theories of compensation? Theories of compensation means what will be the compensation of the system, किस तरह से divide किया जाता है. There are three types of theories for compensation. First is reinforcement and expectancy theory. Reinforcement and expectancy theory. Next is equity theory. First is reinforcement and expectancy theory. Next is equity theory, and last one is agency theory. Last one is agency theory. Reinforcement and expectancy. Reinforcement means the behavior that is rewarded is repeated. Reinforcement means आपको बदले में क्या मिलता है, मतलब आपने अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला तो आप दोबारा से अच्छा काम करोगे. आपने अच्छा काम किया बट आपकी कोई सैलरी नहीं बढ़ी, कोई इंसेंटिव नहीं मिला, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, तो हम उस काम से पीछे हट जाते हैं. तो reinforcement and expectancy means the behavior that is rewarded is repeated, and in that repetition what we expect, that is important. The implication for remuneration for high employee performance followed by the monetary rewards will make employees future performance more likely. And this is somewhat related to the theories of motivation. V-Room's expectancy theory. We will study it in detail in that video. Next is equity theory. As the name indicates, employees are on Adam's equity theory. This is Adam's equity theory कि employee compare with others कि they are getting above or below the others. If they are getting above the others, they are satisfied. If they are not getting above the others, they are below, they try to improve their performance. That is equity theory. Means हमें equity के according जो है काम करना चाहिए. Next is agency theory. Means there are different type. There are two type of people involved in the compensation system. One is the employee, other is the employer, and they two have different goals and they two have different interests, and we have to focus on that how these interests are met, how the interests are met, कि दोनों के benefit किस चीज़ में होता है उसके ऊपर जो है हम met करते हैं. Clear? These are the theories of compensation, reinforcement, equity theory and agency theory. Next, what are the challenges to the compensation system? Means compensation system क्यों इतना आसान नहीं है उसको follow करना? What are the challenges to the compensation management? First is skill based pay. कि in the earlier time the employees are paid according to the job, but nowadays employees are paid according to the
their skills. If you have higher skill, you will get the higher pay. So that is a challenge for the compensation system to decide the salary according to the skills. Pay reviews. Pay is not fixed at all. Every time we need to review it. Means according to the change in the situation, according to the change in the conditions. So we need to go through the pay review. This is the challenge to the compensation. Next is pay secrecy. Every individual are paid differently in प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है सबकी इक्वल सैलरी होती है, बट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक पे सीक्रेसी होती है. वी हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि दे हैव डिफरेंट स्किल्स, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, दे हैव डिफरेंट एजुकेशन एंड दे आर पेड डिफरेंटली. तो दैट इज ए चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. कॉर्पोरेट वर्थ, what is the value of your company, what will be the value of individual to the company. So that is important for compensation management system. Means equal pay for equal worth. Employee participation, we have to involve the employees in the remuneration system, what they are expecting from the organization, that is important. Monetary and non-monetary rewards, how we will decide that what we have to given to them, monetary or non-monetary. मीन्स सिर्फ रिवॉर्ड, प्रेज, रिकॉग्निशन से काम चल जाएगा या पैसे भी देने हैं, वो डिसाइड करना भी एक चैलेंज का काम है. एलिसिटिज्म वर्सेस एगलिटरिज्म. एलिसिटिज्म वर्सेस एगलिटरिज्म, दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एगलिटरिज्म मीन्स इक्वल पे फॉर ऑल और एलिसिटिज्म मीन्स डिफरेंट पे फॉर डिफरेंट individual, for the different employees. Firms become egalitarians, they place most of the employees in the same remuneration. Same remuneration का मतलब equal. And elicitism means different employees have different compensation plan. Clear? These are the challenges to the compensation. Compensation के challenges क्या हैं, compensation क्या होता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर include करते हैं. Clear? इसके बाद 2-3 चीज़ और पढ़ते हैं हम. फेयर वेज क्या है, मिनिमम वेज क्या है, उसको लेके कि व्हाट इज़ फेयर वेज, व्हाट इज़ मिनिमम वेजेस. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेजेस नॉर्मली इंक्लूडेड: मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज इंडेक्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ वेजेस. कंसेप्ट ऑफ वेजेस यही दे दो. व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ वेजेस? कंसेप्ट ऑफ वेजेस, कि वेजेस का क्या कंसेप्ट है. सैलरी तो डिसाइड हो गई कि सैलरी जो है मंथली बेसिस पे हम उसको दे रहे हैं, लेकिन वो सैलरी कितनी होगी या मिनिमम वेज जो है उसका क्या रहेगा. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेजेस: मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज. देयर आर 3 टाइप ऑफ वेज. मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज. क्लियर? मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज. Minimum, as the name indicates, this is the one which provides not merely for the bare subsistence of the life but also for the preservation of the efficiency of the worker. Means minimum wage provides some measures of the education, medical requirement and amenities. मिनिमम जो आपको कम से कम आपकी लाइफ को जीने के लिए और जो आप एमिनिटीज़ आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए चाहिए, उनको मिला के जो वेज बनता है, दैट इज मिनिमम वेज. मीन्स एक पर्सन को सही तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में उस जगह पे रहने खाने के लिए जितना खर्चा चाहिए, दैट इज नोन एज मिनिमम वेज. दैट इज नोन एज मिनिमम वेज, कि कितना खर्चा जो है उसको चाहिए. दिस इज द वेज विच मस्ट इनवेरिएबली पे वेयर द कंपनी बिग और स्मॉल मेक प्रॉफिट और नॉट. मीन्स मिनिमम आपको कितना देना है सो दैट द इंडिविजुअल कैन लिव एंड कैन फुलफिल हिज और हर रिक्वायरमेंट. दैट इज मिनिमम वेज. फेयर वेज, मिनिमम वेज के साथ ही एक और चीज़ आती है, फेयर वेज. फेयर वेज
means equal to the rate prevailing in the same trade in the neighborhood. फेयर वेज मिनिमम तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ वाले नेबरहुड में काम कर रहे हैं उसी पोस्ट पे उनको क्या मिल रहा है, दैट इज फेयर वेज. मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग in comparison to the others, what you are getting in comparison to the others, that is fair wage. Fair means it is fair to be equal to the outside. Next is living wage. Living wage is higher than the fair wage. It provides the bare essential plus the frugal comforts, कि आपको comfort की life के लिए food, clothing, shelter के अलावा education, health और सोशल नीड्स और इंश्योरेंस के लिए भी जो चीज़ चाहिए वो जो आता है लिविंग वेज में. तो नॉर्मली दीज आर इंक्रीजिंग लाइक दैट. मिनिमम वेज, फेयर वेज और सबसे ऊपर आता है लिविंग वेज. लिविंग वेज, ठीक है. मिनिमम कि आपको कितना चाहिए रोटी खाने के लिए, रहने के लिए, अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. फेयर वेज, क्या वो वेज जो आपको दिया जा रहा है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से कंपेरेबल है, दैट इज फेयर. और इस फेयर वेज के साथ ही कुछ कंफर्ट्स अगर जुड़ जाते हैं तो वो आता है लिविंग वेज में. क्लियर? दीज आर 3 टाइप ऑफ वेजेस, मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज. बट कंपनसेशन एक ऐसा चीज़ है या एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो देयर आर डिफरेंट लॉज अंडर विच the wage policy is controlled, where the wage policy is controlled in organization by the government. पहला जो चीज़ आती है, फर्स्ट स्टेप जो इस चीज़ का था, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. पहला आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. दिस इज द फर्स्ट एक्ट रिलेटेड टू द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज. दिस इज द फर्स्ट एक्ट रिलेटेड टू द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज. मीन्स क्या हमें जो है मिनिमम एम्प्लॉयज को देना चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. एंड नेक्स्ट स्टेप इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1967. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. नेक्स्ट एक्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. And that is authorizing all the state government to set up the industrial tribunals which will look into the dispute relating to the remuneration. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट अपना ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकती हैं. अगर एम्प्लॉयज़ को कोई कंप्लेन है सैलरी से रिलेटेड तो वह वहाँ पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. एंड नेक्स्ट एक्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. मिनिमम वेजेस एक्ट, Minimum Wages Act 1948, which talk about the what is the minimum salary of the employees. The purpose of this act is to fixation of the minimum rate of wages to workers in the sweated industry such as woolen, carpet, flour mills, tobacco and all this. And here comes last, the Equal Remuneration Act 1976. Equal Remuneration Act 1976. Equal Remuneration Act 1976. As the name indicates, this is about the equal salary for the equal job in spite of religion, in spite of gender and in spite of area. These are the acts which are laid down by the Government of India to regulate the salary of the workers in organized and unorganized both the sectors. Payment of Wages Act 1936, Industrial Dispute Act 1947, Minimum Wages Act 1948 and the Equal Remuneration Act in 1976. Clear? And there are various tribunals, legislations which help the employees to get the minimum salary and minimum wages. Clear? These are the wage policy state regulation of the wages. Clear? This is all about the compensation system, compensation management. And in the next part of the video we will discuss about the what is the incentive plan and how the incentive is decided in the organizations.
Thank you. Take care.